7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि हमारे कश्मीर के एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को एशियन पैसिफिक सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की फेलोशिप मिल रही है सिंगापुर में। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्ट सिंगापुर से, जहाँ पे उन्होंने वो फेलोशिप अभी अभी हासिल की है। इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ क्योंकि वो कश्मीर के पहले और यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको ये फेलोशिप मिल रही है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनको स्क्रीन पे दावत दूंगी। डॉक्टर हकीम इरफान शौकत। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इरफान, जहाँ तक हमने सुना है दिस इज अ रियल फीचर जहाँ पे आपने यू आर वन ऑफ द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट कश्मीरी डॉक्टर टू बी गिवन दिस APSIC फेलोशिप, सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो आप मच। इससे थोड़ी देर पहले शायद आपको एक अमेरिकन कॉलेज की भी फेलोशिप मिली थी। सो हाउ हाउ इज दिस ऑल हैपनिंग? आपका इंटरेस्ट कैसे बना और ये फेलोशिप का जो है सीन, इससे क्या फायदा होने वाला है आपकी रिसर्च में? बिकॉज एज फार एज आई नो आपने काफी इंटरनेशनल पेपर्स में और रिसर्च वर्क किया है, so if you can elaborate about that. एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की सोसाइटी है। सो Mhm. only after research and your publications, your papers, your basic studies, and they give you this fellowship on the basis of your research. So there are multiple criteria, not only the research papers. There are presentations, your background history, your degrees. They all matter in the fellowship. So recently, I think 6-8 months back, I received also the fellowship from American Society of Cardiology. So that is also one of the prestigious fellowship from the highest body in the cardiology, that is American College of Cardiology. So this is the Asia chapter that is called Asia Pacific Society of Interventional Cardiology. So after going through all the criteria, when we fulfill the criteria, then only they can give this fellowship. And I just received the certificate, as you mentioned a few minutes back. I received the fellowship certificate just now. So it's after a complete degree and your research, your presentations, and all that you can go with the fellowship. जी, तो इसमें कितना वक़्त लगता है? ये कितना कितना ड्यूरेशन का कोर्स रहता है या आपको एप्लीकेशन देने के बाद कितना वेट करना पड़ता है? फ़ॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं? अगर आप उसके बारे में थोड़ा I think बता there are सकते हैं। multiple formalities काफी सारी हैं. Apart from your basic degrees, you have to be a cardiologist. You have to be a basic degree in the cardiology. After that, you have multiple levels you have to cross. आपके papers जितने होने चाहिए. There is a checklist. You have to have this much papers. वो भी जो आपके high index journal में होने चाहिए. It's not that you have publication in any of the journals. Yeah, the high index journals only. Then there are other pointers also जो fulfill करने पड़ते हैं, then only you can receive this fellowship. Like we have seen here from India, we are only 2-3 people who received this fellowship right now, and all others are almost, I think, 10-12 years senior to me. माशाल्लाह। जी, अगर मैं सही समझ रही हूँ या मुझे याद पड़ता है, फाउंडिंग मेंबर्स में डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर उपेंद्र कोल है, एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप इंस्टीट्यूट टू। Yes, सो I हाउ received इज़ it from them only. I received it just now. So they are the pioneers of cardiology from India, and जी, other cardiologists in the Asia chapter you can see. They are from the Malaysia, they are from Singapore, and other Asian countries as well. so how is it going to help the interventional cardiology further, the fellowship, the research that you've done? Obviously, क्या फायदा it's not होने only वाला the yes, it's not only to receive the fellowship. It is what you have to apply onwards. So है? after receiving the fellowship, there is a complete conference for 3 days. So it will some polish the
whatever we have learned till now, we have to repolish it, and we have to gain the experience from other countries as well, what they are doing, what how they are helping their patients. So that's how we have to go it, and we have to apply it back home in our country. And particularly, we are planning a center in Srinagar. It is soon. Srinagar Med City Heart Institute. It will coming inshallah in next 1 month. So we will be definitely helping by all the experience we gain from here. जी डॉक्टर इरफान, जब हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, जनरल नोशन जो था लोगों में, अंडरस्टैंडिंग थी ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी। अब क्योंकि टाइम्स चेंज हो रहे हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी इज एडवांसिंग। सो आपको क्या लगता है, जो ये आपने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, अमेरिकन कॉलेज से हो या अभी एपीएसआईसी के हवाले से है, आर देयर सम ब्रेक थ्रूज जिसमें और ज्यादा कम इन्वेजन के साथ कार्डियोलॉजी हमको डील कर पाएंगे, द कार्डियक इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग? बिकॉज जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, हमारे जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हैं, सो कार्डियक इश्यूज ज्यादा है, फ्रीक्वेंट है, आई वुड से। सो इज देयर समथिंग path breaking that you are planning to do, or your research is helping you? Yeah, definitely. Inshallah, at our own center, we will start evaluating things from, because we are not having much research in our state, particularly if we say overall risk factors, they are common in almost all population throughout the India. But if we have to study the risk factors from our own society, our own population, inshallah, in our center, definitely we will start collecting the data, and definitely we will come out soon with what are the main risk factors why we are having cardiac disease at very young age. Particularly, we're having fatal diseases, many fatal diseases, and we have seen so many young people dying suddenly. So it's not only heart attack which will give certain cardiac death. There are multiple other factors. So inshallah, we will try to look and relook into this data, and then we will see what will come out of it. थैंक यू सो मच। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत मुबारक एक बार आपको फिर से। इंशाल्लाह दोबारा आपको हम अपने साथ किसी प्रोग्राम में जोड़ेंगे और फिर डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि कार्डियक इश्यूज है क्या, क्या वजूहात रहती हैं। जाने से पहले एक छोटा सा अगर आप मैसेज अपने नाज़रीन को देना चाहते हैं, हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हार्ट, एंड ऑल्सो आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आपके बैकग्राउंड में, आप अभी भी वेन्यू पे ही हैं जहाँ पे आपको फेलोशिप मिली है। सो एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ये अपने सेहत का ख्याल तो खुद ही रखना है। मेन रिस्क फैक्टर्स जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, particularly obesity, smoking, then taking high carbohydrates and high fat diets. So obviously we have to modify what the risk factors we can modify. कुछ risk factors जो genetic होते हैं, we cannot modify them. But जो भी modifiable risk factors हैं, definitely we have to try to modify them so that we can at least reduce the risk of getting cardiac disease. Okay. इंशाल्लाह बाकी डिटेल में बात करते हैं। Inshallah. Thank you so much and congratulations once again. Allah Hafiz. Thank you. नाजरीन, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर हकीम इरफान शौकत साहब, जो कि इस वक्त सिंगापुर में हैं और वहां से हमसे बात कर रहे थे अबाउट दिस फेलोशिप। और इंशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने वादा किया है, कोशिश करेंगे इनको दोबारा अपने पास लेकर आए और कार्डियोलॉजी के हवाले से हेल्थ लाउंज में आपसे कभी बात होगी और तफसील से जानेंगे कि किस तरह से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तब तक के लिए RNA के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे जाके और हमारे सिस्टर कंसर्न कश्मीर क्लैरियन पे जाके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू शेयर योर कमेंट्स। तब तक इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नए मौजू पे, किसी नई शख्सियत के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। 10, 9, 8, 7, 6